Hello guys, welcome back to the SkillsTechy. So this will be our fourth tutorial of Python programming from scratch. In the last class we have made some small application and we have learned about how to calculate the age of person in a month. So for today we will learn how to find the data type for the variable in Python. Let's mark down it so that how to find the data type of for a variables in Python. किसी भी वेरिएबल के लिए हम उसके डेटा टाइप को कैसे पता करें, तो आज हम उसका कोड लिखेंगे. तो इंटीजर हमको हम पहले दे देते हैं. लेट्स से इसको 4 असाइन कर दिया हमने, ठीक है, और एक फ्लोटिंग को दे देते हैं हम 4.5 और हमारे पास कौन सा होता है स्ट्रिंग जिसको हम चलो ये दे देते हैं. बूलियन होता है, बूलियन में हमारे पास ट्रू और फॉल्स को डिनोट करने के लिए यूज होता है. यार ये ओके. and now we find data type for a variable. In Python. So how we do that? So this will be our basic video. So if we type integer now, so we find the data type. What the value we have given to the integer, that is 4, which is an integer form. If we give the code of type integer now, that will give the data type for the variable. And same goes with the type. Let's say we have to floating, that is floating, and again a string type के लिए. So that is how we find the data type for any variable. So guys, there is another thing which is known as typecasting in Python. So when we were doing this application, so we did some kind of mistake here. If you have seen that video, you will resemble it. So what we have done it first, we age as an string, and after giving the piece of code, we were calculating the age according to the month. So that was the typecast that we have integer form. हमने एज को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट किया एक कोड देके एज इक्वल टू इंट एज. सो इसको हम टाइपकास्ट बोल सकते हैं. ये हमारा टाइपकास्टिंग हो गया. तो उसी को हम आज देके चलते हैं इसके अंदर. जैसे कि अगर यहाँ पे हमारे पास एक मान लेते हैं कि a इक्वल टू 1 है, जिसको हमने जो कि किस फॉर्म में, ये एक इंटीजर वेरिएबल है. उसको ऐसे लेते हैं, ये क्या है, एक इंटीजर वेरिएबल है. अगर मैं इस a को प्रिंट कराता हूँ, टाइपकास्ट करता हूँ बूलियन के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, so it will give us true. Okay, the same goes with the if we print see a equal to 1 point, that is giving me the float integer. That integer is converted into floating variable, so it is converting it into 1.0. as I told you that floating means the decimal form of a variable. And if we print
string will give us 1, but in the string form, that is in the text form. Okay, this time it is not, it will not act like an integer. It is now an text form, it is now an integer. So that was a short lecture for today. So hope you guys enjoy this session. Thank you. Bye bye.